All right, so let's continue with this. So we have this table given, and we have a total of 75 oranges. यानी कि जो total frequencies हैं हमारे पास, इनका sum क्या आएगा? It's going to be 75. Find the probability that a randomly chosen orange has a mass greater than 200 grams. Okay, so we have masses here. So 160 से लेकर 220 तक जा रहे हैं. 200 से greater masses कौन से होंगे? We have 200 here, so that's these last two rows of the data. So there's a total of 18 plus 5 oranges that satisfy that condition. Mass greater than 200 grams. कितने total oranges हैं? 18 plus 5. और total कितने हैं? वैसे there are 75. So 18 plus 5 divided by 75. That is going to be your probability here. So that's 23 divided by 75. Okay, so that's really straightforward. Now let's look at the next part. It says calculate an estimate of the mean mass. Now remember, how do we calculate the mean? हम इस तरह के intervals के अंदर we first have to find the midpoint. Midpoint find कर लेते हैं, जिसको हम x कहते होते हैं अक्सर. So remember, group data के अंदर हमारे mean का formula क्या होता था? It's the formula for mean is basically sigma fx divided by sigma f. ठीक है? Sigma f तो हमारे पास है. This is sigma f. That's the sum of all frequencies. That's 75. What about fx? Sigma fx. पहले तो हमारे पास x चाहिए. X हम क्या होता है? Midpoints in सारे intervals के. So let's find the midpoints. We've got 165 here, 175, 185, 195, 205, and 250. These are all the midpoints. ठीक है? अब हम क्या करेंगे? This is the frequency. We add another table here, जिसको हम कहते हैं f into x. ठीक है? इस table को fill कर लेते हैं. क्या करना है? Frequency और x को multiply कर देना. ठीक है? So 4 into 165. What's that? 660. 10 into 175, that's 1750. 15 into 185, that's 2775. 195 into 23, that is 4485. 18 into 205, 3690. And 215 into 5, that is 1075. ठीक है? We find the total. इन सबको total कर लेते हैं. 660 plus 1750 and so on. देखें क्या आता है? So ये आता है 14,435. Okay, so that's what we get. 14435. This is your sigma fx. ठीक है? अब आपको सिर्फ values input कर देनी है वहाँ पे. You say this is 14435 divided by 75, and that will give you the mean. So 75 से divide करेंगे. 192.4. 192.467. Or you can say 192.47.
that is your mean, 192.47. ठीक है? Okay. Now, on the grid on the next page, draw a cumulative frequency diagram for the mass of the oranges. For the mass of the oranges. A cumulative frequency diagram banani hai for the mass of the oranges. Let's do that. We have this graph given. We have mass and cumulative frequency on the y-axis, mass on the x-axis. अब सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको इसके अंदर? Cumulative frequencies calculate करनी, ठीक है? So हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? We can make another table on a side, और या फिर हम क्या करते हैं? Let's copy this table here. Copy this table. इसको कर लेते हैं. Okay, this is the table that we have basically, and what we want is we want cumulative frequencies instead of these frequencies. So उसके लिए क्या करना होता है? एक तो हम सिर्फ upper limits को consider कर रहे होते हैं. So anything that's less than or equal to 170, that's here. Mass less than or equal to 170, lower limits हम खत्म कर देते हैं. Cumulative frequency में हम सिर्फ upper limits ले रहे होते हैं. We get rid of these. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर 170, 180, 190, 200, 210 and 220. On the y axis we need to have cumulative frequency. So CF cumulative frequency वो कैसे निकालेंगे? Less than 170 कितने? We've got 4. Less than 180 we add both of them, 4 plus 10, that is 114. Sorry, 14 only. Then we add this 15 more, that's the sum of all of these three. That's going to be 14 plus 15. ये क्या आ जाएगा? तो आपने करना क्या होता है? ऊपर वाले नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दिया. That is 29. 29 में 23 और ऐड कर दिया. That is 52. 52 plus 18, that's 70. And then finally, you can check, you can verify क्या कुछ जो total है. Last number यहाँ पे 75 आना चाहिए because the total frequency was 75. That's your cumulative frequency. ठीक है, अब मैं सिर्फ ये पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं. अब ये मास वाला कॉलम और उसके साथ cumulative frequency वाला कॉलम. ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं. 170 and 4. Let's plot that value. 170 and 4. So that's going to be somewhere here. 170 and 4. That's this point. Then we have 180 and 14. 180 and 14. That's here. 190 and 29. 190, 29. That's here. 252. That's this point. Then 210 and 70. And finally, we have 220 and 75. That's it. ठीक है, अब हमने कर्व बना देना. आपको पता है कर्व जो है cumulative frequency कर्व वो हमेशा इसी तरह की कोई शेप आ रही होती है. इस तरह की शेप तकरीबन इस तरह की. That's how this is going to look like as well. We just draw that curve here. That looks something like this. Again, it's important that you try to make it as smooth as possible, and it should be passing through every point. It should be passing through every point. सर इसमें हमने सर वैल्यू लेनी होती 170 वाली, मतलब कहने के 160 और 170 है तो हम 170 लेंगे. It's higher value लेंगे, higher value. तो इससे पहले अब ये भी होता है, आपको पता है 160 और 170 है ना. So basically the idea is आपको देखें लिखा हुआ है 160 से 170 के दरम्यान में 4 है. 160 से नीचे कितने हैं? 160 से नीचे तो कोई भी नहीं है. कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिसका मास 160 से नीचे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है. ठीक है, अब 170 से नीचे कौन से हैं? We have these 4. 180 से नीचे, अभी जो पहले 170 से नीचे थे वो 180 से भी तो नीचे है ना. इन सब का सम कर दिया.
इसी तरह 200 की बात करें, लेस देन इक्वल टू 200, अब ये ऊपर वाले सारे लेस देन इक्वल टू 200 है, हम सबको ऐड कर दिए। So that's why we use cumulative frequency और सिर्फ अपर लिमिट यूज करते हैं, बस लोअर लिमिट कोई भी नहीं है, सिर्फ हम कहते हैं कि हम 210 से नीचे सारे जितने भी हैं उन सबको ऐड कर देंगे। So that's what we do here, तो अपर लिमिट्स कंसीडर करते हैं। यस ओके सर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एंड पे 160 पे जाके 0 पे मिला देंगे, बिकॉज 160 से नीचे कुछ भी नहीं था, so that's why it touches the x axis here, it's 0 there on the x axis। ठीक है, अच्छा ये हमने प्लॉट भी कर दिया। now it says use your graph to find an estimate for the median, मीडियन का एस्टिमेट करना है। now how do you estimate the median, हमारे पास जो भी टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर कितना था 75, मीडियन क्या होता है उसके हाफ में आता है, उसके 50% के ऊपर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 75 over 2 that is 37.5। 37.5 is not your median, your median is 37.5th value, 37.5th value। अब 37.5 के ऊपर आप देखें, अब क्या ग्राफ के ऊपर, that's this point here 37.5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जाके आपके पास क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, सो आई एम गेटिंग दिस पॉइंट हियर। ठीक है, इसको मैं नीचे जाके देखूं, इट्स कमिंग टू बी समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, सो इट्स 194.5 फॉर मी, राइट। अपने कैलकुलेट, अपने आप ग्राफ पे देख लें आपके पास क्या आता है, आई एम गेटिंग 194.5। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? सॉरी सर ये टोटल हाफ होता है 75। यस टोटल फ्रीक्वेंसी आपका 75 था, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर उसके कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखनी। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 है, अगर 80 का हाफ कर ले 40, तो 40 के कोरेस्पॉन्डिंग 195 आता है। नहीं 80 कहां पर, 80 तो नहीं है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 75 है। वो हाँ, जो ग्राफ एंड हो गया। हाँ वो तो ग्राफ पे आपको, ग्राफ पे वैल्यूज 80 तक लिखी हुई हैं, टेबल में तो 75 से ऊपर नहीं जा रहे ना। ठीक ठीक सर। Okay, so that is what we get। All right, so that is our graph, that is our median। Okay, so then it says oranges with a mass of more than t grams, अब ये t कोई वैल्यू है, मुझे हमें नहीं पता वो क्या है, are labeled class A। Okay, now 20% of the oranges are labeled class A। Use your graph to find the value of t। देखिए टोटल कितने ऑरेंजेस थे, टोटल नंबर was 75, total was 75। 20% of the oranges are labeled class A। 20% of 75 कितना होगा, 20% multiplied by 75, कितने ऑरेंजेस आ गया उसके अंदर, 0.2 into 75, that is 15। There are 15 oranges that are labeled class A, और वो किस साइड पर है, ये देखें, more than t ग्राम से ज्यादा, यानी कोई वैल्यू है यहाँ पे जिससे आगे की बात कर रहे हैं, जिससे बड़ी वैल्यू, यानी ऊपर भी हमारे पास ये ग्राफ का कौन सा पोर्शन आ रहा होगा राइट साइड पे, तो ये ऊपर वाला पोर्शन कोई उसको सेटिस्फाई करता है। अब क्या मतलब, 15 ऑरेंजेस फ्रॉम द टॉप जिनका सबसे ज्यादा मैसेज है, 15 ऑरेंजेस जिसके सबसे ज्यादा मैसेज है, उनको हमने क्लास ए लेबल किया। अब 15 ऑरेंजेस कौन से होंगे, we can go here, 75 तो ये है, this was 75, 75 में से 15 माइनस करें तो 60 से ऊपर जितने भी ऑरेंजेस हैं वो सारे आपके क्लास ए डिफाइन हुए हैं। तो अब 60 के ऊपर आप कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे क्या आती है, दिस वैल्यू हियर, यू गो ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर आप जाके देखें, दिस वैल्यू इज समवेयर अराउंड 204 ग्राम्स। तो बेसिकली 204 से राइट साइड पे आपके पास 15 ऑरेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम द ग्राफ, कि वो 60 से लेकर 75 तक, वी गॉट 15 ऑरेंजेस हियर। तो वो आपके पास एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बनता है, दैट इज 204 ग्राम।
आप क्या कहोगे, t की वैल्यू यहाँ पे दैट इज 204. Okay, let me just explain this again. So oranges that have mass more than a particular value are labeled class A. अब कोई यहाँ पे x axis पे वैल्यू है जिससे ज्यादा अगर आपका वेट है, ज्यादा मास है राइट साइड पे, तो आपको क्लास ए लेबल कर दी. अच्छा, वो क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसने दी है? 20% of the oranges are labeled as class A. Okay, so 75 total थे. What is 20% of 75? 20% of 75 is 50. So this is the first thing that you figure out. There are 15 oranges that are going to be classified as that. तो अब देखें, आप टॉप से देखें, टोटल कितने थे? 75. 75 में से 15 माइनस करें तो ये 60 से लेकर 75 तक. These are the oranges that are classified as class A. इनको आपने class A assign किया. ठीक है, अब ये कट ऑफ पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है? The cut off point that you are getting here is this point 60. अब जाओगे यहाँ पे ग्राफ के ऊपर 60 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे आपके पास x एक्सिस पे क्या वैल्यू आती है? 204 ग्राम्स. तो बेसिकली हो क्या रहा है? 204 ग्राम से ज्यादा वाले सारे oranges they are classified as class A. हम 204 ग्राम से ज्यादा वाले सारे oranges को हमने select किया. We have to look at what is given. What was given was 20% of the oranges. 20% of the oranges क्या है? That is 15. But then we are looking at the top 15 oranges, right? Because हम more than t grams की बात कर रहे हैं. So we're looking at the upper part of the graph. ग्राफ की ऊपर वाली साइड से हम यहाँ पे देख रहे हैं. और वो कहाँ तक आना है? We will have to see on the graph there. 75 total था. 75 में से 15 माइनस करें, we get this point 60. 60 के अगेंस्ट आप जाके देखोगे वैल्यू क्या आती है? That's this value. That's 204. Is this clear? Yes, sir. Yes. Okay, good. Now let's move to the next part. Oranges with a mass of 178 grams or less. अब देखिए less की बात हो रही है. They are used to make orange juice. With a mass of 178 grams or less. तो आप ग्राफ पे जाके देखिए 178 grams. That's here. इससे left side पे बात हो रही है. ठीक है? अच्छा. Use a graph to find an estimate for the number of these oranges that are used to make orange juice. That's pretty straightforward. आपको less वाला देखना है. आप बस यहाँ पे जाके देख लें. इस point के ऊपर आपके पास क्या corresponding value आती है? This is this point for me. So for my graph, I'm getting 12 here. So there are 12 oranges. इससे कम 0 से 12. 12 oranges total है that are used to make that orange juice. So I just write 12 there. ठीक है, तो आपको देखना है कि आप ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो या कहीं दरमियान से देख रहे हो. So उसके ऊपर डिपेंड करता है. Okay. So that's 12. All right, let's look at this now. So we have a triangular prism. AC is so it's a prism, right? Prism का क्या मतलब होता है? इसका कोई क्रॉस सेक्शन होता है और दोनों साइड्स के ऊपर सेम फिगर होती है. तो दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों एंड्स के ऊपर. So for example, you have this shape triangle, this triangle here. It's the same triangle on the other side as well. दूसरी साइड पे देखो, बिल्कुल opposite side पे you've got the same triangle there. जब सेम फिगर होती है दोनों साइड के ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? Call this either the base, हम base भी कह सकते हैं, और इसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं. It's the base or cross section. ठीक है, remember that. ये जो दोनों sides पे same figure आ रही होती है, we've got this triangle that's there on both sides. So we have this triangular prism. सबसे पहले वो क्या कहता है? Calculate AB. So you've got some information. You've got ABC triangle. You've got two sides, 14 and 15. You've got the angle between those two sides, that is 27 degrees. You have to find the length AB. Now we have two possibilities. सबसे पहले तो it's not a right angle triangle. The trigonometry, basic trigonometry, simple trigonometry ratio तो हम use नहीं कर सकते. We think about the sine rule next. या पहले साइन रूल सोचते हैं. साइन रूल, इज दैट पॉसिबल? हमारे पास एक साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल नहीं है. अच्छा, दूसरी साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल भी नहीं है. वी डोंट हैव अ पेयर ऑफ
side and an angle, तो sine rule भी नहीं लग सकता, we have to use the cos rule. Cos rule लगता है यहाँ पे, that's a square equals b square plus c square minus 2bc. Cos of a, just remember, जो angle होता है यहाँ पे उसके opposite side जो होती है वो left पे आ रही होती है. तो AB की opposite angle, that's 27. We say if this was a square is equal to 14 square plus 15 square minus 2 into 14 into 15 into cos of 27 degrees. यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जब evaluate कर लें 14 square plus 15 square minus 2 into 14 into 15 into cos of 27. This is 46.77. And the value of a therefore is going to be 6.84. So I get 6.84 centimeters here. 6.84. That is the length. ठीक है, सब simply में cosine rule use करते हैं. अच्छा, then it says the length of the prism is p centimeters. The length of the prism, यानी कि इसकी बात करें, this length here, this is p centimeters. This is p, and the volume of the prism is 1000 centimeter cube. Calculate the value of p. Okay, now remember, prism का volume का formula क्या होता है? Prism का volume is given by area of base multiplied by the height. ठीक है, अभी height depend करता है, तो आप height का मतलब होता है the distance between the two sides of the prism. तो एक side ये है, मतलब distance between two between the cross sections. जो आपके पास cross section का end होता है ना, एक end ये है, ये triangle है, दूसरा end वो है दूसरी side के ऊपर, जो same figures होती हैं, congruent figures दोनों sides के ऊपर, उनके दरमियान जो distance होता है वो इसकी height होती है, इस formula के अंदर height आ रही होती है. ठीक है, area of base, that is just this area of triangle. तो इसका मतलब जो p की वैल्यू वो हमारी कोई चीज है, लेंथ है, हाइट है, मतलब है ना? yes, so p is basically your height. Exactly. So आपका ना डिपेंड करता है कि किस तरह से फिगर पड़ी हुई है. This was a prism that was placed like this. अगर वो इस तरह से वर्टिकल पड़ा होता, यही प्रिज्म, तो आपको वहां पे हाइट लग रही होती वो, right? So it's essentially the distance between those equal sides. ये दोनों क्रॉस सेक्शन होता है ना, क्रॉस सेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइट होती है. इस तरह पड़ा हो तो आपको वर्टिकल लग रहा होगा, साइडवेज पड़ा हो तो आपको वो लेंथ लग रही होगी. So that's the same thing basically. Okay. Now, volume of prism is given by this. It's area of base multiplied by height. फिर क्या करेंगे? We'll say the volume is equal to this. Volume given and that is 1000. That is equal to area of base. Area of base क्या है? That's this triangle. This is the base or cross section. इसका area क्या होएगा? We have two sides and the angle between them. Area of triangle का formula लगा लेते हैं. We have half into 14 into 15 into sine of 27 degrees, right? Half into AB sine C, provided that the angle that we're using is the angle between those two sides. So that is what we're doing here, right? Half into 14 into 15 into sine of 27. Multiplied by the height, यानी के P. यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, P आप देख लें आपके पास क्या आता है. यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, it's only 7. So P is going to be equal to 1000 divided by 7, 15 and sine of 27. ये आपके पास P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. So 1000 divided by 7 divided by 15 divided by sine 27, that is 20.98. 20.98 centimeters. Okay, this is the length that I get from that. Is this okay? Yes sir. सर ये नहीं समझ आया कि 1000 डिवाइडेड बाय वो क्यों किया हमने? यार वो वॉल्यूम है. वॉल्यूम गिवन था, राइट? हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वी जस्ट इनपुट वैल्यूज देयर. एरिया ऑफ बेस क्या है? दैट्स दिस थिंग. This is the area of triangle.
multiplied by height, that was p in this case. अब सिर्फ इस इक्वेशन को ओके सॉल्व मैंने किया, देखा नहीं, सॉरी। तो बस इक्वेशन को सॉल्व किया, उसके बाद तो और तो कुछ नहीं किया. Okay. All right, let's move on. The prism is to be packed in a carton. The carton is a cuboid of size 15 by p by h centimeters. अब देखें ये cuboid है, so it's going to look something like this. आप समझे कि इस तरह का cuboid है. Right, ये cuboid है. अब इसकी एक साइड जो है that is 15, एक साइड जो है that is p, and एक side is h. Find the smallest possible value of h. Smallest possible value of h. अच्छा. Now let's go there again. Prism की हमारे पास sides कौन सी है? अच्छा, एक तो हमारे पास ये आ गया 15, ठीक है, एक तो हमें नजर आ रहा है वहां पे. So let me actually do that. Copy this figure. ये सर हमारे एक पास 15 prism है, है. एक माइनस 20.98 है, और हाइट सर बेस के ऊपर वाली हाइट नहीं है सर हमारे पास, लेकिन Okay. Yeah, so let's think about that. So this is the prism that we want to fit in that cuboid. इस prism को हमने उसके अंदर डालना है, उस cuboid के अंदर, ठीक है. अब देखिए कुछ लेंथ यहाँ पे given है. ये नीचे वाली लेंथ 15 है, this is 15, इसका मतलब है कि ये लेंथ तो यहाँ पे 15 आ जाएगी, ठीक है. Similarly ये साइड P है, ये भी साइड P है. The only problem is what about this height, vertical height of the cuboid? इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब अपने क्यूबॉइड पे जाके देखोगे, अपने सॉरी प्रिज्म पे देखोगे, you actually need this height. ये हाइट आपकी क्यूबॉइड की कम से कम सर इतनी ये होनी चाहिए जितनी इस प्रिज्म की हाइट है. This height is what you're looking for. Okay? ये clear है? यस सर. Yes? यस सर. So this is the height. Yes, so we need that perpendicular height because देखिए प्रिज्म को इसके अंदर डालना है ना, इसके अंदर डालना है तो क्यूबॉइड की जो वर्टिकल हाइट है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए जितनी ये इसकी हाइट है, ये वाली हाइट इसकी, ठीक है, कम से कम इतनी होनी चाहिए. So let's find that height. We have this right angle triangle जिसका हमें हाइपोटेन्यूज पता है 14 है. Remember ये 15 तो पूरी लेंथ थी, 15 को नहीं यूज कर सकते उस ट्रायंगल के अंदर, 14 यूज कर सकते हैं. That is the hypotenuse of this figure. We have the angle that is 27 degrees. We can use simple trigonometry. So we have hypotenuse and perpendicular. So sine of 27 is equal to perpendicular over the hypotenuse. यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी. That's 14 times sine 27. You can see what that turns out to be. So 6.355. 6.356. That is what we get here. 6.356. That is the smallest possible value of h. ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड की हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए. इससे ज्यादा हो सकती है, that's fine. प्रिज्म उसके अंदर आ जाएगा. इससे कम होगी तो प्रिज्म उसके अंदर फिट नहीं होगा. ओके? All right. सर तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि स्मॉलेस्ट है सबसे ज्यादा? यही स्मॉलेस्ट है क्योंकि प्रिज्म की हाइट इतनी है ना, तो क्यूबॉइड की हाइट की बात हो रही ना, ये हमें क्यूबॉइड की हाइट की स्मॉलेस्ट, क्यूबॉइड की स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाइट चाहिए. क्यूबॉइड अगर इतने इससे भी छोटा होएगा तो फिर तो प्रिज्म उसके अंदर नहीं पूरा आएगा. तो क्यूबॉइड की हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए. इससे ज्यादा हो जाए तो वो तो फर्क नहीं पड़ता, प्रिज्म आ जाएगा उसके अंदर. कम से कम क्यूबॉइड ठीक की सर, हाइट इतनी ठीक होनी चाहिए, राइट. उसके अंदर डालना है प्रिज्म, तो इससे कम हाइट होगी तो वो उसके अंदर फिट नहीं आएगा. ठीक सर. ओके,
let's move to the last question then. So this is the vectors question. So f equals 4 and minus 3 and g equals 1 and minus 5. Find g minus 2f. So that's pretty straightforward. 1 minus 5 minus 2 times 4 into minus 3. इसको आप करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 minus 5 minus 8 and minus 6. या तो evaluate कर ले 1 minus 8 क्या होता है, that is minus 7 and minus 5 plus 6 that will turn out to be 1, so that's minus 7 and 1, which that was fairly straightforward. आपने उसको evaluate करना था. अच्छा, अब उसके बाद वो क्या कहता है, Petra writes the modulus of f is greater than the modulus of g. अब modulus क्या होता है, modulus किससे निकालते हैं, remember modulus का formula क्या होता था, if we have this vector a and b that is represented by some vector, or let's say this is xy, there's a vector a which is given by x and y, इसका जो modulus होता है that is equal to x square plus y square का square root. Pythagoras से आ रहा होता है basically x square plus y square का square root. So यहाँ पे दोनों के modulus निकाल लेते हैं. f का modulus क्या है? That is 4 का square plus minus 3 का square. That will turn out to be 5. Modulus of g क्या आता है? That is 1 का square plus. इसको डेल्टा भी कहते हैं? नहीं, डेल्टा तो नहीं कहते. Absolute value, magnitude कहते हैं, magnitude of f, magnitude of g. हाँ, magnitude कहते हैं, डेल्टा तो किसी और चीज. This is the magnitude of f, the magnitude of g. Okay, so this turns out to be square root of 26, जो आपके पास होता है 5 point something, right? So 5 point something, देखने क्या आता है, square root 26, so that's 5.0. 5.10. ठीक है, आपने यहाँ पता चल गया आपका modulus of g is basically greater than modulus of f, so that's why Petra was actually wrong. आपका जो magnitude है of f is less than the magnitude of g. It's the other way around. Okay? Yes sir. तो ये आपको ये concluding statement देनी है, आपने बताना है कि जो है ये 5.1 जो है that is bigger than 5. ठीक है, एक मार्क इसका मिल जाएगा, एक मार्क इसका मिल जाएगा. It's 3 marks. Third mark is going to be writing this thing. 5.1 is actually greater than 5, so that's incorrect. There's no color. Okay, then it says we have O, A, and B that are points with position vector of A, that is OA equals A, and OB is equal to B. So OA is going to be A, OB is equal to B. B is the point on OA such that OB is equal to 1 over 3 OA. Okay, तो ये point यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया 1 over 3 times OA. So अब ratio wise देखो, अगर ये 1 है बाकी कितना होएगा, बाकी 2 होएगा. अगर ये total 3 है, total length अगर ये 3 है, तो उसमें से 1 part नीचे और 2 parts ऊपर. one part P के नीचे और 2 parts P के ऊपर. अच्छा, O, Q and R lie on a straight line. O, Q and R there lie on a straight line here, and Q is the midpoint of PB. Q is the midpoint of PB. So this length here is equal to this length here. The midpoint is बताया हुआ, Q is the midpoint. Okay, so this is the information that is given. सबसे पहले it says find PB in terms of A and B. अब इस तरह के फिगर में जहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन पे जहाँ पे आपको डायग्राम दी हो ना, what you have to think about is what path you can find from the graph, इसके ऊपर from the figure जिसकी आपको values पता हो. ठीक है, so हमें values क्या पता है, हमें सिर्फ OA पता है, that is equal to A, and OB is equal to B. जब हमें पता है कि OP is equal to 1 over 3 times OA, OA क्या है, OA is just a small a, it's actually 1 over 3A. तो हमने OP तो यहाँ से निकाल ली. ठीक है, OA की जगह हमने A input कर दिया, so we have this value of OP as well. So we know that. We have to find PB. So let's look at the figure. How can we start at P and end at B such that on the path जो vectors आ रहे होंगे वो हमें पता होंगे. हम क्या कर सकते हैं, we can go from P to O, P से O पे चले गए और फिर O से हम B पे चले गए, right? PO
and then OB. We can say PB is equal to PO plus OB. अब PO क्या है? PO is the negative of this. अगर OP 1/3A है, PO इसका opposite है, that's minus 1/3A. ठीक है? Plus OB, that is just B. So PB is going to be 1/3 minus 1/3A plus B. ठीक है? ये आपके पास आ गया PB. Okay. Now in the second part it says find OQ in terms of A and B. Give your answer in the simplest form. जब उसने लिखा हो simplest form के अंदर तो वहाँ पे simplification is necessary. You have to do that. You have to do the simplification. So this is what you're given here. OQ in terms of A and B. OQ find करते हैं. We start at O and end at Q. O से आपको Q पे जाना है. O to Q. Okay, so what can we do here? We can go from O to P and then from P to Q. Right? OQ को हम लिख सकते हैं. This is OP plus PQ. ठीक है? OP क्या है? OP तो हमें पता है. अच्छा, OP is 1/3A. ये तो हमें पता है 1/3A. Let's write that here. 1/3A. PQ क्या है? P से Q. PQ तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें PB पता है. PB पूरा पता है ना? PB पूरा पता है. हम कह सकते हैं PQ is basically half of PB. Does that make sense? Because P से Q पे जो है ये halfway है PB का. Q is the midpoint, right? Q क्योंकि midpoint है, ये पूरा वेक्टर होगा P से B तक, उसका half is going to be PQ. हम क्या कहते हैं? PQ is just half of PB. PB हमने निकाला है पिछले पार्ट के अंदर, वो यहाँ पे इनपुट कर दें. उसको अंदर इनपुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/3A plus 1/2 multiplied by PB. PB क्या था? minus 1/3A plus B. अब उसको सिंप्लीफाई करना होगा. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/3A minus 1/6A plus 1/2B. या बच्चे कैलकुलेटर से अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. आपके पास ये आ जाएगा 1/6A plus 1/2B. ठीक है? So this turns out to be 1/6A plus 1/2 times B. Okay? अच्छा, let's look at the next part. Now it says QR is equal to 2 times OQ. QR is equal to 2 times OQ. अच्छा, let's go to the figure again. QR is 2 times OQ. ठीक है? यानी कि अगर ये पार्ट 2 है तो ये पार्ट कितना है? 1. ये टोटल कितना हो गया? These are 3 parts. ठीक है? अच्छा, अब वो क्या कहता है? Show that AR is parallel to PB. AR आपने शो करना है कि ये PB के पैरेलल है. Let's think about this now. AR is this and PB is this. ये दोनों आपने पैरेलल शो करने हैं. So how can we do this? पैरेलल वेक्टर्स किस तरह से शो करते हैं? वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होने चाहिए. They should be scalar multiples of each other. So what we can do here is we can first find the value of AR. पहले हम AR figure out कर लेते हैं. Remember PB तो हमारे पास है ना पहले से. PB तो हमारे पहले कहीं पे निकाला हुआ है. हमारा जो first part था वहाँ पे we already have PB here. Okay, that's minus 1/3A plus B. We already have the value of PB. AR नहीं है, AR यहाँ पे find कर लेते हैं. अच्छा, how do you find AR? A से start करना है, R पे जाना है. So one pathway could be AO and then OR. इसमें देखते हैं हमारे पास information है क्या? This is AO plus OR. AO क्या है? A से O, that's negative A minus A, right? AO is minus A, so we have minus A here. OR, अब OR क्या है? OR तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें OQ पता है, right? OQ पता है हमें, और उसने हमें क्या बताया हुआ है? QR is equal to 2 times OQ. Okay.
यहाँ पे you have to be a bit careful. अगर OQ जो भी OQ की वैल्यू है उसका डबल इज QR, ठीक है, यानी कि ये 1:2 है। अगर OQ1 होता तो QR would be 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर OQ1 है तो जो OR है that would be 3, तो OR is 3 times OQ, ठीक है। Does that make sense? OR is going to be 3 times OQ, तो OR की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, this is 3 times OQ, और वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डाल देते हैं, -a + 3 into 1/6 a plus 1/2 b, and we simplify this, we get -a plus 1/2 a plus 3/2 b, यहाँ से हमारे पास आ जाता है -1/2 a plus 3/2 b, ठीक है। So we get AR equal to this, and we have PB equal to, PB क्या था ऊपर, -1/3a plus b, -1/3a plus b, this was PB। दोनों आ गए हमारे पास। अब हमें शो करना है कि ये पैरेलल है, ठीक है। AR हमने फिगर आउट कर लिया, we have to show that these vectors are parallel। पैरेलल शो करने के लिए all you have to do is जो corresponding components हैं उनकी रेशियो फिगर आउट कर लें, ठीक है। रेशियो ऑफ द corresponding components, तो बेसिकली इसको आप डिवाइड कर दें इसके साथ, देखें क्या आता है, इसको आप डिवाइड कर दें इसके साथ, that's just 1, b के साथ सिर्फ 1 लगा हुआ है ना, so there's no coefficient there, that means it's 1। इसकी रेशियो फिगर आउट कर लें, दोनों की रेशियोस फिगर आउट कर लें, so we have -1/2 divided by -1/3, और दूसरी साइड पे क्या है, 3/2 divided by 1। If they come out to be equal, इनकी रेशियो और इनकी रेशियो अगर ये सेम आ जाती है, that means they are parallel। ये तरीका हो सकता है, अब ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, you might find this easier। आप ये कर लें, आप इनको आपस में डिवाइड कर लें, so B और A को इस तरह डिवाइड कर लें, that is also fine, और इसको इस तरह डिवाइड कर लें, so you could say ये Y कंपोनेंट है और ये B कंपोनेंट है, that's 3/2 divided by -1/2। ये देखें क्या आता है, और आप देख लें 1 divided by -1/3। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब है कि ये पैरेलल है, ठीक है। सब फिगर आउट कर लें, ये क्या आता है ऊपर वाला, that's 3/2 multiplied by -2, that's 3। What about this, 1 into -3, which is -3। Now since they are both equal, they are parallel। तो आपने रेशियोज फाइंड करनी है और उनको देखना है कि अगर वो इक्वल आ जाती हैं, they are parallel। Does this make sense? Yes, sir. Okay, now it was quite tricky, so if there were any questions on this vectors वाले questions में, especially जो रेशियो वाला पॉइंट होता है उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, especially यहाँ पे जो हमने देखा कि ये किस तरह फिगर आउट करना है, OR is basically 3 times OQ, उसको फिगर आउट करना is the key part here। so आपको ये बता था कि ये 1 है तो ये 2 होएगा, इसका मतलब है पूरा जो है वो 3 होना चाहिए, 3 times OQ होना चाहिए, so that's what we use there। Is this clear? Any issues? क्योंकि ये रेशियो इक्वल आई है इसलिए हमने कहा ये पैरेलल है, अगर रेशियो इक्वल नहीं आती तो ये पैरेलल नहीं होते। Any questions on this? Sir, easy है। Okay, good। Let's do the last question very quickly. This seems to be fairly straightforward, so it shouldn't take much time। So f of x is equal to 3 into x minus 2 and g of x is equal to this। आपको g of 2 फाइंड करना है, यानी कि g फंक्शन के अंदर जहां पे भी आपके पास x लगा हुआ है, x की जगह आपने 2 इनपुट कर देना, right? So you just find g of 2। So g of 2 is going to be 7 into 2 divided by 4 minus 1। जब कैलकुलेटर से इवैल्यूएट कर लें, 14/4, that is 3.5, 5/2 minus 1, that's 2.5। yes, okay, 2.5 g inverse of x, g का इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने का क्या मेथड होता है, g of x equals 7x/4 minus 1। पहले स्टेप में आप
फंक्शन को तो y y से को रिप्लेस कर देते हो, y is equal to 7x over 4 minus 1, x को सब्जेक्ट बनाना है अब आपको, so we get yes sir 7x over 4 equals y plus 1. Now we get 7x 4 equals 4 into y plus 1 and x equals 4y plus 4 divided by 7. तो हम कहते हैं हमारा जो इनवर्स होगा g inverse of x that is equal to 4x plus 4 divided by 7. That's the inverse. yes sir यही है ठीक है, ये आपका इनवर्स आ गया. आपने पहले फंक्शन को y से रिप्लेस कर देना है, एंड पे जाके x की जगह यू राइट इनवर्स और यहाँ पे वेरिएबल राइट साइड पे चेंज कर देंगे. इसका बैकग्राउंड होता है, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट, आपको स्टेप्स यही शो करने हैं, दैट्स इनफ. So that's what you do. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो कहता है given that f of t is equal to 6, find the value of t. So given that f of t is equal to 6, find the value of t. Okay. अब f के अंदर आपने x की जगह t इनपुट करना है. This is the function f, right? So f of t equals 6. अब जहां पे भी आपके पास उस फंक्शन के अंदर x था, x की जगह t डाल दें. That's 3 into t minus 2. That's equal to 6. You just have to solve this equation. Okay, so you get 3t minus 6 equal to 6. 3t equals 12 and t equals 4 from there. t की वैल्यू आपके पास यहाँ से 4 आ जाएगी. All right? yes sir Okay, good. ये लास्ट वाला मैंने आपको व्हाट्सएप किया था सही वही है चलें, let's think about this. So we have f of 7x minus 7x over 4 minus 1 that is equal to px plus q. उसने कहा this is equal to px plus q. आपको p और q की वैल्यूज निकालनी है. सबसे पहले फिगर आउट कर लेते हैं हमारे पास है क्या ये f of 7x over 4 minus 1. x की जगह उस फंक्शन f के अंदर आपने क्या करना है वो पुट कर देना है. So यहाँ पे लिख लेते हैं f of x was equal to 3 into x minus 2. That's the function. ठीक है. अब जहां भी उस फंक्शन के अंदर हमारे पास x आ रहा है, x की जगह we have to input this thing. तो थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेते हैं, that might make it easier. 3x minus 6 है, तो क्या करेंगे 3 into 7x over 4 minus 1, x की जगह ये चीज इनपुट कर दी, then we have minus Yes, 6 outside. We simplify this, we get 21x over 4 minus 3 minus 6 and that gives us 21 over 4x minus 9. उसने क्या कहा हुआ था, उसने कहा था this is actually px plus q. वो कह रहा है कि आपका ये जो वैल्यू है वो ये है, आपके पास क्या आ रहा है ये आ रहा है. They have to be both identical to each other. इसका मतलब ये है जो आपके पास x का कोएफिशिएंट आ रहा है that should be equal to p और जो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है that is equal to q, right? So p की वैल्यू यहां से उसको कंपेयर कर लें दोनों साइड्स को, तो p turns out to be 21 over 4 and q turns out to be equal to minus 9. ठीक है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं. जो उसने आपको कहा था कि ये है आपका ये आ रहा है, that means they are both supposed to be equal. जो x का कोएफिशिएंट है वो भी इक्वल होना चाहिए और जो कांस्टेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए. So that's where you get the values of p and q from. Okay, is this clear? Any Yes, sir. questions on this? Any problems with this? no मुझे लग ही रहा था ऐसे ही होगा. Okay, very good. So that's it for today then. So we are done with May-June 2019 ka paper 2. Now for tomorrow, you have to make sure that you have attempted at least the first 5-6 questions of October-November paper 2. Uska paper 2 aapne attempt karke aana hai. We will start discussion on that tomorrow. And the class is going to be at some time around 11 a.m. inshallah. Okay? So October-November 2018 paper 2 variant 2. सुबह तो सर फ्राइडे है. जी जी. तो सर सुबह 11 o'clock को. यस, सुबह कल 11 बजे इंशाल्लाह.
सर जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स जो है अभी तो मैंने ये जूम वाली रिकॉर्डिंग्स मैंने पोस्ट नहीं की है। आई विल बी डूइंग देम ओवर द वीकेंड इंशाल्लाह। जूम वाली सारी रिकॉर्डिंग्स ना आई विल बी अपलोडिंग देम ऑन यूट्यूब एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स ऑन द नून ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, और मैं यहाँ पे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी आई विल पोस्ट द प्लेलिस्ट लिंक, यू कैन आल्सो एक्सेस इट फ्रॉम देयर। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पर अभी मैंने अपलोड ये जूम वाली रिकॉर्डिंग्स नहीं अपलोड की। You can find them over the weekend inshallah. जो नून पे क्लासेस होती हैं उनके रिकॉर्डिंग्स वहीं पे सारी अवेलेबल है, so you can see the playbacks for all of them there. सारे playbacks available होते हैं। All right, okay, so that's it for today. I'll see you all again tomorrow inshallah. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.